Good morning, everyone. Hope you all are feeling fine. Dear students, today we are going to discuss message writing. So, students, let's begin with the introduction first of all, and let's see what is a message. Yes, students, we see that we need to send written messages frequently to various people in our contact. Therefore, it is very important, इसलिए बेटा ये बहुत important है for everyone to learn to write short and clear messages. And students, the purpose of writing a message जो है बेटा क्या पर्पज़ है, हम क्यों राइट कर रहे हैं. द पर्पज़ ऑफ राइटिंग अ मैसेज इज़ टू सेंड इंफॉर्मेशन. बेटा हमें किसी को इंफॉर्मेशन सेंड करनी है तो हम मैसेज राइट कर सकते हैं. और अ पीस ऑफ न्यूज़ टू समवन हु इज़ नॉट प्रेजेंट एट द मोमेंट. बेटा अगर हमें किसी को न्यूज़ प्रोवाइड करनी है, कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है और वो पर्सन ऑन द स्पॉट जो बेटा मोमेंट उस मोमेंट पर जो है प्रेजेंट नहीं है वहाँ पर, तो हम बेटा क्या करते हैं उसके लिए मैसेज राइट करते हैं. ओके. एंड बेटा क्वाइट ऑफन द क्वेश्चन ऑन मैसेज राइटिंग इज बेस्ड ऑन अ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन बिटवीन टू persons, and it is expected that the important information contained in the conversation, कि जो भी उस कन्वर्सेशन में इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको बेटा हमें क्या करना है, थर्ड पर्सन को कन्वे करना है. इज कन्वे टू द third person. Okay, it is expected that the important information contained in the conversation is conveyed to the third person. Let's discuss some main points, students. Yes, beta, here are some points which you have to remember while writing a message. Beta, it is a short piece of writing that does not require the sender's or the receiver's address. बेटा एक शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग है मैसेज जिसमें बेटा हमें सेंडर और रिसीवर के एड्रेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. ओके. इट इज़ अ शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग दैट डज नॉट रिक्वायर द सेंडर्स और द रिसीवर्स एड्रेस रिटन देयर इन. देन स्टूडेंट्स, only a brief salutation should be given. For example, dear mom, dear father, dear brother. Okay, जिसके लिए भी बेटा हम मैसेज राइट कर रहे हैं. देन स्टूडेंट्स मेंशन द डेट एंड टाइम. डेट और टाइम मेंशन करना है स्टूडेंट्स व्हेन द मैसेज वाज रिटन. जब आप मैसेज राइट कर रहे हो बेटा उस दिन की आपको डेट राइट करनी है एंड टाइम. ओके. देन स्टूडेंट्स, योर मैसेज शुड कंटेन ओनली द इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. ये स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान रखना कि जो भी इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है सिर्फ वही मैसेज में राइट करनी है. ओके. योर मैसेज शुड कंटेन ओनली द इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. irrelevant details should be avoided. जो भी उससे irrelevant जो डिटेल्स हैं बेटा उसको हमारे को जो है अवॉइड करना है उस कन्वर्सेशन में से. देन स्टूडेंट्स, पुट द सेंडर्स नेम और सिग्नेचर एट द एंड ऑफ द मैसेज. लास्ट में बेटा आपको क्या करना है, सिग्नेचर. पुट द सेंडर्स नेम और सिग्नेचर एट द एंड ऑफ द मैसेज. देन स्टूडेंट्स, पुट योर मैसेज इन अ बॉक्स. And remember students, do not exceed word limit. Word limit means 50 words. Okay, 50 words से ज़्यादा नहीं आपको राइट करना है. Do not exceed word limit. और 50 words कहाँ, for the body of the message. Then students, the use of tense depends on the ideas or themes contained in the message. So students, you have to remember these points while writing a message. Let's see format of the message. Yes students, let's see here. In the very first line beta, write down message in capital letter. Okay, in the very first line write down message in capital letter. Then students, in next line write down date. Okay, date, time. Write date and time when message is written. Okay. Then students, dear, dear mom, dear father. Okay, dear करके आपको salutation start करनी है. Start with a brief salutation. For example, dear uncle, dear aunt. Okay, dear brother, like this students. Then students, body of the मैसेज. यहाँ पर बेटा आपको कंटेंट लिखना है. जो भी बेटा इंफॉर्मेशन है आपकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिसको बेटा आपको थर्ड पर्सन को कन्वे करना है वो आपको यहाँ पर राइट करनी है. ओके, राइट ऑन हियर इंफॉर्मेशन, बॉडी ऑफ द मैसेज. देन स्टूडेंट्स, लास्ट में आपको क्या करना है, नेम और सिग्नेचर ऑफ द पर्सन
राइटिंग द मैसेज. जो भी पर्सन जो है बेटा राइट कर रहा है, मैसेज को राइट कर रहा है, उसका नेम और सिग्नेचर ऑफ द पर्सन राइटिंग द मैसेज सबसे लास्ट में. देन स्टूडेंट्स इन लास्ट पुट द मैसेज इन अ बॉक्स. बेटा जब हमारी सारी जो है इसमें फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो जाएंगी तो बेटा लास्ट में को क्या करना है, पुट द मैसेज इन अ बॉक्स. ओके स्टूडेंट्स, let's discuss a message students to make it more clear. Aparna had the following conversation with her sister, Venu's dance teacher, Mrs. Jasprit. Since she was going to the market soon afterwards, she leaves a message for Venu, who read the conversation below and write the message in about 50 words and put the message in a box. So students, let's read this conversation. So read it very carefully. Okay, read this conversation very carefully and try to understand. Mrs. Jasprit. Hello, this is Mrs. Jasprit speaking. May I please speak to Vinu? बेटा यहाँ हमें जो है टू पर्सन्स में जो है कन्वर्सेशन हो रही है, मिसेस जसप्रीत और अपर्णा. अब मिसेस जसप्रीत जो है वो किससे बात करना चाहती हैं, वीनू. ओके, तो हमें मैसेज किसके लिए राइट करना है, वीनू. मिसेस जसप्रीत. हेलो, दिस इज मिसेस जसप्रीत स्पीकिंग. मे आई प्लीज स्पीक टू वीनू? Aparna, I'm afraid Mrs. Jasprit. Vinu has just left for library. कि वो तो अभी लाइब्रेरी के लिए गई है. Mrs. Jasprit, when is she likely to come back? कि वो कब तक वापस आ जाएगी? Then Aparna, in about 2 hours. Could I give her a message? कि क्या मैं उसको एक मैसेज जो है दे सकती हूँ? Then Mrs. Jasprit, yes please. कि yes आप surely मैसेज आज दे सकती हैं. Could you tell her? कि क्या आप उसको बता दोगी? Could you tell her that there would not be a dance class today, but there will be a class tomorrow? कि आज कोई डांस क्लास नहीं है और डांस क्लास कब है, tomorrow, but there will be a class tomorrow at 5:30 p.m. She should bring extra tiffin with her as the class will be for 2 hours. Will you kindly convey the message to her? Then Aparna, yes, I will. Now students, let's read it once again. Hello, this is Mrs. Jasprit speaking. May I speak to Vinu? Aparna, I'm afraid Mrs. Jasprit, Vinu has just left for the library. यहाँ students conversation किन के बीच में हो रही है, Mrs. Jasprit और अपर्णा. बातचीत किन के बीच में हो रही है बेटा, किन टू पर्सन्स के बीच में हो रही है, Mrs. Jasprit और अपर्णा. और बेटा मिसेस जसप्रीत ने जो फ़ोन किया है, जो कॉल की है, वो किसके लिए की है, वीनू के लिए. उन्हें किससे बात करनी है बेटा, वीनू से. तो मैसेज किसके लिए है बेटा, फॉर वीनू. ओके, कन्वर्सेशन किन के बीच में है बेटा, मिसेस जसप्रीत और अपर्णा. मिसेस जसप्रीत, व्हेन इज शी लाइकली टू कम बैक? अपर्णा, इन अबाउट 2 hours. कुड यू गिव हर अ मैसेज? मिसेस जसप्रीत, येस प्लीज. कुड यू टेल हर दैट? यहाँ से बेटा अब आपका मेन मैसेज जो आपको कन्वे करना है वो स्टार्ट हो रहा है. ओके, यस प्लीज, कुड यू टेल हर, क्या बताना है, क्या बात बतानी है. व्हाट्स द मेन मैसेज स्टूडेंट्स, व्हाट्स द मेन इंफॉर्मेशन? दैट देयर वुड नॉट बी अ डांस क्लास टुडे, बट देयर विल बी अ क्लास टुमारो एट 5:30 p.m. She should bring extra tiffin with her as the class will be for 2 hours. It's the main information. Okay, it's the main information. Will you kindly convey the message to her? कि क्या प्लीज़ आप मेरा मैसेज को दे दोगी? अपर्णा क्या रिप्लाई करती है, yes I will. तो what's the main information? From that से स्टार्ट होगी कहाँ तक बेटा, for 2 hours, जिसे हमें आगे कन्वे करना है. और किसे कन्वे करना है, टू वीनू. कॉल कौन कर रहा है स्टूडेंट्स, मिसेस जसप्रीत. ओके, नाउ स्टूडेंट्स लेट्स सी हाउ टू राइट द मैसेज. इन वेरी फर्स्ट लाइन बेटा राइट डाउन मैसेज वर्ड इन कैपिटल लेटर्स, देन राइट डाउन डेट. ओके, जिस दिन भी आप मैसेज राइट करो राइट डाउन डेट, then write down time like 5:30 p.m. Okay, then student salutation, dear Veenu. मैसेज किसके लिए है बेटा, वीनू के लिए. सो राइट डाउन डियर
वीनू। अब बेटा हु कॉल्ड अप, किसने कॉल की थी, किसने फ़ोन किया था बेटा, मिसेस जसप्रीत, उनकी डांस टीचर वीनू की। तो वीनू को हम क्या बताएंगे, योर डांस टीचर मिसेस जसप्रीत asked me to inform you, or we can say बेटा कि your dance teacher Mrs. Jaspreet has called up to inform you, ओके कि उन्होंने कॉल की थी आपको इन्फॉर्म करने के लिए, इन्फॉर्म यू दैट द डांस क्लास टुडे हैज़ बीन कैंसिल, कि आज की जो डांस क्लास है वो कैंसिल हो गई है। और स्टूडेंट्स वी कैन राइट डाउन दैट देयर वुड नॉट बी अ डांस क्लास टुडे बट इट विल बी tomorrow at 5:30 p.m. Or we can write down, your dance teacher Mrs. Jaspreet asked me to inform you that the dance class today has been cancelled and there will be a class of 2 hours tomorrow at 5:30 p.m. क्योंकि क्लास जो है बेटा 2 hours की है, तो उसने और क्या एडवाइस किया, टेक एक्स्ट्रा टिफिन विथ you, okay, take extra tiffin with you can write down as the class will be for 2 hours. Like this students, you can write down here body of message, it's the body of message, okay students. Then beta in last write down name of Aparna. हमें यहाँ किसका नेम राइट करना है, नेम ऑफ द पर्सन राइटिंग द मैसेज, जो पर्सन जो है मैसेज को राइट कर रहा है, आगे बता रहा है, कन्वे कर रहा है, उसका नेम आपको यहाँ राइट करना, ओके, राइट डाउन द नेम ऑफ अपर्णा, ओके स्टूडेंट्स. Let's read it again. In very first line, write down message. In next line, write down date. Then beta after date, write down time. Then salutation. किसको message देना है? Dear Vinu. Who called up? Call किसने किया बेटा? Your dance teacher, Mrs. Jaspreet, asked me to inform you that the dance class today has been cancelled. There will be a class of 2 hours tomorrow at 5:30 p.m. and take extra tiffin with you. In last write down name of the person writing the message, that is Aparna. At last put the message in a box, okay students, remember put the message in a box, okay students. Now students, I hope that all of you have understood it well. Now students, remember all the main points, okay, remember all the main points while writing a message, okay students. That's all for today beta. Thanks and have a nice day.